अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है डैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। रूट जैसा कि हमें पता है डेवलप करती है फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ द सीड एंड इट ग्रोज टुवर्ड्स द soil. What is its functioning? If we talk about the function of the root, then the root mostly help to anchor the plant in the soil and absorb nutrients and moistures and different anions from the soils. All the vascular plants have roots that are mostly underground, and their main function is to anchor the plant in the soil, and it also helps to absorb the water and the dissolved minerals, and it also helps to conduct these dissolved minerals and water to the stem, and also help to store the reserve food materials. If we talk about the general characteristics of roots, then we will come to know that root is the dead part of the plant that is non-green. Non-green means that it is without chlorophyll, present underground or beneath the soil. Positive geotrophic means that it moves toward the soil, and negative phototrophic means that it moves away from the light, and positive hydrotropic moves toward the water, and it does not bear the buds. There are no buds present on the roots. If we observe the stem, then we will come to know that the buds are present on the stem, but these buds are not present on the root. Buds present for vegetative propagation in sweet potato and Indian redwood, जिसे हम डेल्बर्जिया सिसु भी बोलते हैं, स्वीट पोटैटो जिसे आइपोमिया भी बोलते हैं, स्वीट पोटैटो मीन जिसे आम ज़ुबान में शकरकंदी कहा जाता है। तो जो बर्ड्स हैं जो फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वहाँ पे बर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जो रूट्स हैं उनके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स भी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। इट्स मीन वी कांट डिफरेंशिएट roots into nodes and internodes. They have unicellular root hairs. Root hairs are the small thread-like structure that are emerged from the primary roots. Their main function is to absorb the nutrients from the soil. What is the way that how the root works? The root system of a plant constantly provides the stem and leaves with water and dissolved minerals. So the basic function and the main primarily function of the root is to absorb water and mineral from the soil, and what they do, they conduct it or they provide it to the stem and the leaves. It another purpose of the root is that it also helps to keep the plant anchor in the soil. The growth and the metabolism of the plant root system is supported by the process of photosynthesis occurring in the leaves. तो रूट्स जो है अगर हम इसको कंक्लूड करें तो रूट इज़ द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट दैट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल and it grows toward the soil. It's mean that it is the negative phototropic and the positive geotropic, and mostly it is underground. और इसका फंक्शन क्या है? कंडक्शन, absorption and anchoring. If we talk about the type of the roots, then there are the two type of roots based upon their origin, based upon the way from which they develop. So there are the two types of roots, tap roots and the adventitious roots. Tap roots, the roots, these are the true roots or the larger roots that develop from the radical part of the seed. So these are the plants with typically one central large root. अगर आप कभी रूट को ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि सेंटर में एक लार्ज सी रूट प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से छोटी छोटी रूट, जैसे प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट जो हैं वो इमर्ज होती हैं। तो इस तरह से पूरा एक रूट सिस्टम जो है ना वो डेवलप हो जाता है। और ये कहाँ से डेवलप होता है? ये रेडिकल से, सीड का जो रेडिकल है वहाँ से जो है वो टैप रूट जो है वो डेवलप होती है। अब टैप रूट की एग्जांपल हम देखें तो डेंडिलियन आ जाता है, पार्सले है, टर्निप है, कैरेट है, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द टैप रूट्स. The second type is the adventitious roots.
In some plants, the roots are originated from the other part of the plant rather than the radical of the seed. They may be emerged from the stem, they may emerge from the leaves. So these roots that develop from other part of the plant seeds are known as the adventitious roots. सो टैप रूट्स क्या होता है कि जब कभी क्या होता है कि जो रेडिकल है वहाँ से रूट्स नहीं निकलती, बल्कि दे डेवलप फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। वो अदर प्लांट्स वो ब्रांच भी हो सकती हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, फाइब्रस एंड स्टोरेज। तो उनको हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूट फाइब्रस रूट सिस्टम। जो टैप रूट सिस्टम है वो रूट सिस्टम होता है जो कि प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट्स मिलकर बनाते हैं, जबकि एडवेंटिशियस रूट जो है ज़्यादातर जो है वो मोनोकॉट रूट्स होती हैं, यानी कि मोनोकॉट जितने भी होते हैं उनके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, क्योंकि वो वहाँ से डेवलप करते हैं जहाँ से रेडिकल के अलावा वो किसी भी पार्ट से जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका मकसद ये ब्रांच भी हो सकती हैं, अनब्रांच भी हो सकती हैं, ठीक है, फाइब्रस भी हो सकती हैं, और इनका फंक्शन जो होता है वो टू स्टोर द फूड। तो अगर आप डायग्राम में देखो तो जो टैप रूट सिस्टम है, देखो सेंटर में एक मेन रूट है जिसको हम टैप रूट कहते हैं, फिर वहाँ से प्राइमरी रूट्स निकल रही हैं, फिर सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स। तो जो फाइब्रस रूट सिस्टम है वो जो है वो फाइब्रस जो जिसमें जो है वो क्या है कि वो स्टेम से निकल रही हैं, ठीक है, वो एक नेटवर्क सा बना रही हैं, वो ब्रांच भी हो सकती हैं, वो अनब्रांच भी हो सकती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रूट एंड द टू टाइप्स ऑफ रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स एंड द टैप रूट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रीजन्स कौन कौन सी हैं रूट्स की, ठीक है, और हर रीजन का जो है वो फंक्शन क्या होता है। तो ये जो है जस्ट इस सारे जो सीरीज़ हम जो कवर कर रहे हैं वो कौन सी है? प्लांट मॉर्फोलॉजी की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रूट्स के रीजन्स कितनी हैं और वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और उनको किस तरह से जो है वो डिवाइड किया गया, हर रीजन का अपना एक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। आप इसको अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।